Hello friends and welcome to the theIAShub. So today in this video we are going to discuss the UPSC paper 2023. UPSC paper ka one important question that can be linked to the world history part. That is what I am here to discuss today. My name is Snigdha Mam. I am the world history faculty here in this institute. So today this question that you can see behind me bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world that is being asked by UPSC here. So see, clearly you can see this question can neither be linked to geography nor can it be linked to society. So if you want to connect to bring about the best ideas in the answer that you write for this question, that will come from your knowledge of world history. If you have read the history of different countries, the development, the industrialization of various countries, that is where railways development played a role, and that is what can be used in the answer to this question. Right? अगर आप देखें तो आंसर इज वेरी वेरी ईजी. अगर आपने थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री को टच भी किया है, यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी इंप्रेसिव आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो एज यूजुअल, एज यू नो कि हर UPSC आंसर को you have to divide in 3 parts: introduction, body and conclusion. That should be the main structure of your answer. इस question को भी you have to write in this format, right? So introduction, what can be the introduction to this answer? You can start by writing about railways, right? You know about the introduction of railways in India. इंडिया में डलहौजी के टाइम पे 1850s के अराउंड, 1853 के अराउंड रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. सो एज सच आप इंडिया के बारे में तो नहीं लिखेंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इंडिया. यू विल राइट अबाउट द जनरल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज. 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से रेलवे स्टार्टेड taking shape in the modern form in the world. Starting from Britain, the world's witnessed a transport revolution in the form of emergence of railway, and this transport revolution later led to several economic and social developments and impacts on the world, which we will see ahead. Something like that you can introduce general outline of railways की introduction, and then you start the body part, जिसमें you will address the main demand of the question, that is the socio-economic effects. ठीक है, that is the main demand of the question. So socio-economic effects, देखिए इसमें you have to write the social effects also, economic effects also. Break down the question into different parts. ठीक है, आप किसी भी पार्ट को छोड़ेंगे नहीं. You have to break down the question into different parts. So यहाँ parts क्या क्या बन रहे हैं? Economic effects, social effects. Right? Now these effects can be positive or they can be negative as well. That means आप जब effects लिख रहे हैं, you will not just be focusing on positive side or negative side only, but both of them will be included in your answer. Right? So ultimately these are the 4 things that should come out in your answer. Right? So let's see ki what all content you could have included in this answer. Very easy. Agar you know, let's suppose ki you have not gone through world history in much detail, then also you could answer this answer very well. Agar aapne modern history padhi hai, you have seen the development of railways in India, you have seen the impacts of railways in India. From there also you could get a hint ki kya kya points लिख सकते हैं. वो अलग बात है that you won't get much international examples to write. जैसे question around of all the world, countries of all the world पूछ रहा है, so you might not have those examples if you have not studied world history, जिसकी वजह से marks पे आपके काफ़ी impact होगा. But still, as a UPSC aspirant, you should not leave any answer. You can try to attempt even then. Right? अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, then you can write a very impressive answer to this question. General points आपको पता है, then you have to just add examples from each and every country that you have read in your world history. Right? I'll show you what all can be written in the content or the body part of this question. So firstly we will discuss the economic impacts, the positive impacts firstly of introduction of railways. सबसे पहले positive impacts क्या हुए, that we will see. सबसे first impact, important impact was industrial revolution. Right? Industrial revolution, the transformation of the process of industrial production from machine made goods
from handmade goods to machine made goods, that was facilitated by modern means of transportation, one of those being railways. ठीक है, देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे यू विल गेट टू नो कि न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का बहुत बड़ा रोल था इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में स्टीम इंजन, कमिंग अप ऑफ स्टीम इंजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जहाँ जहाँ स्टीम इंजन हमने डिप्लॉय किया वहाँ वहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं बूस्ट हुई, राइट. सो इसी स्टीम इंजन को वी ऑल्सो डिप्लॉयड देम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, and there in railways we introduced the steam engine. पहले आप देखिए कोयला डाल डाल के यूज टू रन द प्रिमिटिव रेलवे सिस्टम्स, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ रेलवे स्टार्टेड कमिंग अप एंड फास्टर, क्विकर, चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड एंड दिस बूस्टेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो रेलवेज दैट केम अप ड्यूरिंग द industrial revolution, the modernized railways, they boosted industrial revolution. So सबसे पहला impact जो था industrial revolution, everywhere where it was being processed, that got a boost with the introduction of railways. आप ब्रिटेन में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, जापान after Meiji restoration, Japan focused on its internal restoration, reformation, and railways infrastructure development was one focus area in which railways played a very important role. Germany also under Bismarck focused on the process of industrialization, and usme bhi they focused a lot on railways development. So all of these examples you can write in this point. That is how you are talking about all the countries. ठीक है जी. Next important contribution effect of railways development was boosted agriculture and fishery sector. राइट, यू सी जब रेलवेज नहीं था द मूवमेंट ऑफ गुड्स वॉज वेरी स्लो, टाइम टेकिंग, राइट, बिकॉज ऑफ विच दीज एग्रीकल्चरल और फिशरी प्रोडक्ट्स दे आर पेरिशेबल गुड्स. ठीक है, जल्दी खराब हो जाते हैं, सो दे यूज टू गेट वेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज द मूवमेंट बिकेम क्विकर एंड दैट prevented the wastage, the loss of agriculture and fishery products. इससे क्या होगा, जब वेस्टेज कम हो रही है, वेस्टेज कम होने का मतलब है क्विकर मीन्स वेस्टेज, लेस वेस्टेज, लेस वेस्टेज का मतलब है मोर इनकम. फायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा. मोर इनकम, ज़्यादा पैसा है आपके पास, मतलब इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो. ठीक है, सो मल्टीफरस इम्पैक्ट हुआ. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस वर्चुअस साइकिल देयर, राइट. दिस साइकिल ऑल्सो यू कैन ड्रॉ. जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ इंक्रीजिंग लिविंग इंक्रीज होगा, मोर एंड मोर रेलवेज इन्वेस्टमेंट विल बी देयर. दिस वर्चुअस साइकिल काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, द पीपल, द इनकम ऑफ द कंट्री. ठीक है, सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यू कुड हैव एडेड, राइट. उसके बाद बूस्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, राइट. ऑब्वियसली व्हेन अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक रेलवे इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, उससे क्या हुआ, लैक्स ऑफ पीपल वर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, राइट. सो क्या हुआ, इंटरनल ट्रेड बहुत बड़ा, जिसका एग्जाम्पल आप इंडिया में से दे सकते हैं, राइट. ऑल दी कंट्रीज एग्जाम्पल यू कैन गिव, यहाँ पे आप इंडिया की भी दे सकते हैं. इंडिया में ब्रिटिश के टाइम पे रेलवे डेवलपमेंट शुरू हुई. ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ट्रंक लाइन्स, right, the main lines that were connecting the port cities of India with the agriculture produce centers. ठीक है, so port cities like Calcutta, Bombay, Karachi, Madras, they were connected to the agricultural centers which were mainly in the Gangetic plains. ठीक है, Gangetic and Cotton regions में जितनी agricultural production हो रही थी, that was moving to our port cities. ठीक है, इस तरीके से इंटरनल ट्रेड, इंटरनल मूवमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल, इट इंक्रीज्ड. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड कि डोमिनेंट रीजन्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स वर अराउंड द रेलवे सेंटर्स. सो आप कह सकते हैं इंटरनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड, इट इंक्रीज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज. दैट वाज अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ इमेज शोइंग कि ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट होगी विद द डेवलपमेंट, स्टार्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज. ठीक है, इसके बाद नाउ व्हेन ट्रेड इज गेटिंग बूस्ट, कनेक्टिविटी इज गेटिंग बूस्ट, तो एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट होंगे.
right? You can sell the products that you are making to the outside world also, and railways acted as an important means of transportation, quicker, cheaper and efficient again. So exports भी बहुत इस टाइम पे बूस्ट हुए, राइट. इफ यू वांट टू टेक एन एग्जांपल, इंडिया में डेडिकेटेड कॉटन लाइंस एस्टैब्लिश की गई थी ब्रिटिश द्वारा. सो द रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, दे वर बीइंग एक्सपोर्टेड एंड सोल्ड टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. सो इन दिस टाइम 1850-60s के अराउंड इट इज एक्सपेक्टेड कि कॉटन एक्सपोर्ट 468% से भी ज़्यादा बढ़ गया था, राइट. यू कैन राइट, देखिए आई नो कि मे बी इससे पहले आपके पास इतना डाटा यू माइट नॉट हैव, राइट, बट आफ्टर दिस यू कैन यूज दिस डाटा टू राइट योर आंसर्स. पहले, इससे पहले यू एटलीस्ट हैव नॉलेज, यू माइट नॉट हैव दिस डाटा. सो जितनी नॉलेज थी उसके बेसिस पे आप आंसर लिख सकते थे. इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट आंसर, जस्ट इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टू राइट एन इम्प्रेसिव आंसर, so that you can write multiple diverse examples, right? We are writing here of America, Britain and all that aspects. ठीक है. सो इट इज बीइंग सेड कि कॉटन एक्सपोर्ट्स दे ऑल्सो ग्रू फ्रॉम इंडिया बाय ऑलमोस्ट 45% in the 1860s, right? That is how you could have added this point, right? Internal connectivity बढ़ेगी from one region to another. The connectivity increased, new areas were explored because railways are there, तो दूर दूर तक जा सकते हैं. ऐसे areas में भी now transportation system reached that was not explored earlier, right? So new areas of raw material settlements were developed. जहाँ पे कोई नहीं रहता था अब लोग वहाँ जाने लग गए, वहाँ हमें रॉ मटेरियल मिला तो वहाँ लोग सेटल भी होने लग गए, राइट. सो मतलब रेलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एरियाज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रिएटेड न्यू एरियाज ऑफ सेटलमेंट ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट था एम्प्लॉयमेंट पे. सी आज भी इंडिया में आप देखें द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इज रेलवेज, राइट. उस टाइम पे भी व्हेन रेलवे स्टार्टेड कमिंग अप, डेडिकेटेड मैनेजर्स, डेडिकेटेड कंपनीज टू मैनेज रेलवे स्टार्टेड कमिंग अप. एंड जब ये कंपनीज बनती हैं दे नीड पीपल टू वर्क अपॉन. रेलवेज में लेबर भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, आपको इंजीनियर्स भी चाहिए. Different kind of diverse jobs started coming up and railways became one of the major means of employment provider to the populations of different countries, right? So Britain, America, Japan, India, everywhere you will see increase in employment opportunities because of development of railways. ठीक है. इस तरीके से you have written almost 7 economic impacts. ठीक है. अब you will proceed to the social effects. If you know more you can write it, I think, but these 7 points cover in the entire information, right? इसके बाद social effects, society पे क्या क्या impacts हुए, बहुत ही important development है. You have read about something about this in your modern history book also, and otherwise world history में we have read it in Italy, in Germany we have read nationalism, the idea of national integration, unity among people from different parts of the nation, that was facilitated by railways. See, how does it happen? Initially what is there, you are very separate, very far from each other. The revolutionaries are there in Bengal, in Punjab Bhagat Singh is there, in South there are some revolutionaries, in Kashmir there is some revolutionary. They are not connected with each other, they do not know each other, they cannot support each other, so their efforts are disintegrated. 1857 के रिवोल्ट के पहले में यही हुआ था, that the leaders were fighting for their own causes, they were not united, they were not integrated in their effort, जबकि उनका enemy same था, that was British. ठीक है. इसीलिए वी फेल्ड इन 1857. बट आफ्टर दिस 1860s में जब से रेलवेज का डेवलपमेंट शुरू हुआ, द रेवोल्यूशनरीज कुड मूव, the ideas could get transported, the newspaper, the press material could be transported from one region to another. Then we started to realize कि हम लोग तो सब इंटीग्रेटेड हैं, उनका भी दुख ब्रिटिश ही है, हमारा भी दुख ब्रिटिश ही है, राइट. सो इन दैट वे वी गॉट यूनाइटेड, वी गॉट इंटीग्रेटेड. हमारी रीजनलिस्टिक टेंडेंसीज दे स्टार्टेड गोइंग डाउन, कल्चरल एक्सचेंजेस इंक्रीज्ड, वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट देयर कल्चर, दे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट आवर वेज ऑफ लिविंग, एंड इस तरीके से आवर यूनिटी, आवर ब्रदरहुड, आवर fight against common enemy got a boost,
and that is what generated the idea of a nation. ठीक है, we started identifying each other as one, fighting against the common enemy, that is British. That is what is raised the idea of nationalism. Nationalism is nothing but when you unify on the ground of common cultural heritage or history, and you identify an enemy that is suppressing you and you want to throw them out. Right? That is what started. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, German unification, Italian unification, this was also, German and Italian unification was also facilitated by development of railways. यहाँ भी movement of ideas, revolutionaries, it was facilitated. देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली की स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया था. जर्मनी एंड इटली, दे यूज्ड टू बी अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स. आज का जो आप प्रेजेंट जर्मनी और इटली जो देख रहे हैं यूनिफाइड फॉर्म में, वैसा नहीं था. They also have, like India, 300-400 German states used to be there, Italian states used to be there. Napoleon reorganized these states into provinces and all, and then developed the railway system, facilitated the development of railway system also. इसी railway system की development की वजह से movement of ideas, people, revolutionaries started, which brought about national unity, weakened the regionalistic forces, and created a national united front against the common enemy. There also, right? So ये आप example भी add कर सकते हैं, because the question is asking us to write the effect of railways on entire world, on the countries of different countries of the world. ठीक है, so इस तरीके से आप add कर सकते हैं, right? Second point, regionalization began to break down, right? Earlier we were Punjabis. Earlier Jhansi ki Rani was restricted to her area. She did not have the larger vision. But जब railways develop हुए, then the revolutionaries started meeting. The people started coming closer, the ideas started coming closer, cultural exchanges started. That is when we realized that unity is going to help us rather than the regionalistic tendencies. So regionalism weaken hui and nationalism strengthen hui. Right? That was the second impact. Third impact अगर देखेंगे आप, this is the first mass transportation system. Mass transportation मतलब जब millions of people they can transport at one single time together. That is what is mass transportation system, right? So railways was one such main mass transportation system that developed, जो एक ही time पे cheaper, efficient, environment friendly way में lakhs of people को transport कर सकता था from one place to another. So that an effect that you can write, a very important form of mass transportation emerged. Right? Next impacts क्या है? Since development of railway started, cheaper mode of transportation it was. So migration that got a boost. Internal migration as well as international migration got a boost as railways provided a cheaper and quicker mean to move from one place to another and to even come back from that place to your place of origin. So migration got a boost, right? Now urbanization also got a boost. That means city towns started developing around the railway lines. ठीक है, जितनी भी रेलवे लाइंस है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, वहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, यू आर गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर, सो पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट फ्रॉम देयर विलेजेस, देयर हिंटरलैंड्स, एंड दे स्टार्टेड कमिंग अप एंड सेटलिंग इन सिटीज एंड टाउन्स वेयर रेलवे सिस्टम्स वर डेवलपिंग और लिंकिंग. Right? And that is what is the process of urbanization. Urbanization का process boost हुआ. You can see the examples. USA में Chicago and Minneapolis ऐसी दो जगहें थी that developed a lot as the urban centers because they laid on the rail जहाँ पे railway lines were expanding. Their railway lines expanded, people started coming up into these cities and these cities expanded, right? In the similar fashion, India में if you see, जो British ने urban centers establish किए, majority of those urban centers were located on the areas where railway lines were there, right? So this happened. Then social mobility. Social mobility means you can say transportation of ideas also started a lot, right? Transportation of ideas from one person to another person, from one region to another person, that is what happened, right? Communication
spread vastly. Communication जो है आप रेलवेज के थ्रू मैसेजेस वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. जैसे मैंने आपको कहा, न्यूज़पेपर अगर बंगाल में प्रिंट हो रहा है, यू कैन सेंड इट टू, ब्रिंग इट टू मैनी अदर रीजन्स बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्यूकर चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज. ठीक है, सो आप समझ ही पा रहे हैं कि रेलवेज ने कैसे हमारी पूरी लाइफ्स को इट ट्रांसफॉर्म्ड. इकोनॉमिक वेज में भी, सोशल वेज में भी इट इम्पैक्टेड ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ अवर ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, राइट. सो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो लिख लिए हैं, बट देर आर ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड वी शुड नॉट मिस दैट इन द आंसर, क्योंकि उसी से हमारे इम्पैक्ट्स मार्क्स विल बी इम्पैक्टेड. So negative impacts क्या है? Firstly, see, development of railways also boosted the colonization, the exploitation of the colonial empire. जैसे आप इंडिया में देखें, इंडिया में ब्रिटिश took away the wealth of India, took away the resources of India, like anything, especially with the development of railways. अगर आप देखें, इंडिया में railways का father you can say is Lord Dalhousie itself. He was the one who planned and expanded railway systems in India, और उनका सिर्फ एक ही motive था, that motive was to exploit the raw material and wealth of India, right? So railways had negative impacts in creating exploitation of the colonies, right? You can write the example of Africa also, right? India became, or Africa became, an extension of the factories, the financial centers of Britain itself. So colonization का बहुत impact हुआ railways की development पे. Environmental impact was also heavy. Second negative impact, see, railways is an efficient and less polluting form of transportation, but railways की वजह से deforestation होती है, right? Long lines of railways you have to establish. That happens when you cut trees. Deforestation happens. Habitat destruction of animals जो इस forest में रह रहे हैं, that happens. Use of coal was also increased. Initially railways कोले पे चलती थी, so they caused lot of pollution, right? So environmental impact was also heavy. And finally, inequality also rose. रेलवेज़ का डेवलपमेंट ज़रूर हुआ, ट्रेड बूस्ट हुआ, इकोनॉमीज़ बूस्ट हुई, बट सिर्फ उन्हीं लोगों की हु वर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज़, इन द ट्रेड दैट हैपेंड थ्रू रेलवेज़, राइट? सो जो पुअर लोग थे, दे रिमेन्ड पुअर, दे बिकेम मोर पुअर. द कैपिटलिस्ट, द रिचर, द इन्वेस्टर्स, द एग्रीकल्चरिस्ट, द लैंडलॉर्ड्स, they grew richer and richer. So inequality as a result of development of railways also increased a lot, right? So that is how you can holistically cover all the points in the answer. Positive impacts, negative impacts, both on society and economy, where taking examples from each and every country. That is how you could have written the answer to this question, right? Finally, write a conclusion just saying that railways has had widespread impact. Even today it is having larger implications for the entire world. ठीक है, इस तरीके से you can conclude the answer. So the major requirement in this answer is writing examples from different countries, and that is what you will get from the world history knowledge, right? So follow world history well. It helps you in various exams, in various subjects, in essay writing as well. So keep following the IAS Hub. Thank you so much for joining.